more in detail about the protozoan disease in the form of malaria. प्रोटोजोन डिसऑर्डर है ये मलेरिया, ठीक है. इट इज़ caused by a protozoan which is called plasmodium species. और प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज़ है. there is plasmodium falciparum, there is plasmodium vivax, there is plasmodium malariae, and there is one more called plasmodium ovale. So here we have mentioned three: plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium malariae. These are some of the species of plasmodium that cause malaria, but it is spread by the female anopheles mosquito when she already has that plasmodium, and when she visits the human for a blood meal, then she will transfer that particular plasmodium into the human being. ओके. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ऐसे भी है कि हम इकोसिस्टम, हम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वगैरह में, वी से दैट द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज़ नॉट अ ट्रू पैरासाइट इन द रियल सेंस. हमारा ब्लड मील में से वो आयरन यूज़ करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हर ओन एग्स, एंड वो टाइम पे शी कैन ट्रांसफर और शी कैन स्प्रेड दी प्लाज्मोडियम. सो एक्चुअली प्लाज्मोडियम is using the female anopheles mosquito as a postman to spread her to spread the plasmodium through the human beings, and उसका खुद का उसमें क्या होगा, प्रोपोगेशन होगा. किसका? प्लाज्मोडियम का. तो ऐसे जब पैरासाइट होते हैं जो दो होस्ट को यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेनेटिक है. जैसे ये केस में कौन है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, और कौन है? ह्यूमन बीइंग है. फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो उसका प्राइमरी होस्ट है. और ह्यूमंस में असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इसलिए हम उसका सेकेंडरी होस्ट है. ओके. सो इन द केस ऑफ द प्लाज्मोडियम, the humans are the secondary host, and the female anopheles mosquito is the primary host. Okay. Now, so the female anopheles mosquito will visit the human for a blood meal. Okay, and we have discussed this in our classroom. Then when she visits for the blood meal and she bites the human being, from her saliva she will release some cells called sporozoids. अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो प्रोटोजोन्स है जैसे कि प्लाज्मोडियम, उनकी जो असेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसमें अलग अलग स्पोर्स होते हैं. किसी का नाम स्पोरोजॉइड्स है, ट्रोफोजॉइड्स है, शाइजॉन्स है. तो ये माइटोसिस कर करके अलग अलग स्टेजेस आती रहती है. तो जो ह्यूमन बीइंग को जो स्टेज इन्फेक्ट करती है, उस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजॉइड स्टेज. So when a female anopheles mosquito visits the human being for a blood meal, she will inject through her saliva into the human beings the stage of plasmodium, which is called as sporozoids. And these sporozoids will reach the liver cells. They will infect the liver cells. They will undergo mitosis, results in the formation of cells which are called as liver merozoites. Now these liver merozoites will break the hepatocytes and get released into the blood. Now we have got liver merozoites which are released in the blood stream. तो एंट्री लिया था स्पोरोजॉइड्स ने, वो रीच किया लिवर में, दे चेंज इनटू द लिवर merozoites. Now the liver merozoites, they come out of the liver. So मलेरिया के सिम्टम्स में हेपेटोमेगैली, थोड़ा सा लिवर में सूजन आना अनकॉमन नहीं है. तो अब ये जो लिवर मीरोजॉइड्स हैं, सम ऑफ देम गो बैक टू इन्फेक्ट द लिवर अगेन, बट मेजॉरिटी ऑफ दिस लिवर मीरोजॉइड्स दे एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल्स. अब एरिथ्रोसाइट फेज स्टार्ट हो गया, जहाँ पे दे आर एंटरिंग इनटू द आरबीसीज, एंड दे विल चेंज इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ओके. द लास्ट अमंग देम आर द आरबीसी मीरोजॉइड्स. इसमें बीच में भी दूसरे स्टेजेस होते हैं, और ये जो स्टेजेस होते हैं ये हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके हीमोजॉइन बनाते हैं. नाउ द फाइनल स्टेज हैज कम इनसाइड द आरबीसी, which is called as the RBC merozoites. They will rupture the RBCs, and the RBC merozoites will come out, and at the same time there is release of hemozoin, and your body detects hemozoin as something toxic, and the body increases its temperature. So when the RBCs rupture and the hemozoin is released, you will find that there is a rise in the body temperature. Okay. अब जो लीवर मीरोजॉइड्स है उसमें से अब जो आरबीसी मीरोजॉइड्स है
the RBC merozoites, some of them will go back to infect more RBCs. Okay, and some of them will change over here into the gametocytes. The male and the female gametocytes में change जाएंगे. कौन? RBC merozoites. यहाँ पे भी फ्यूजन नहीं होगा, वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बॉडी में होगा. ओके, तो पहला स्टेज जो इन्फेक्ट हुआ वो था स्पोरोजॉइट्स. इट रीच द लिवर टू फॉर्म द लिवर मीरोजॉइट्स. The liver merozoites ruptured some of the liver cells. They entered into the RBC to start the erythrocyte phase, and that is forming the RBC merozoites. The RBC merozoites will rupture the RBCs. It will cause high fever. They will change into male and female gametes, and many of them will go back who RBC merozoites to infect more RBCs. ओके, और ये पूरी लाइफ, ये जो साइकिल कंप्लीट करने के लिए आरबीसी के अंदर कुछ आवर्स लगेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 24 आवर्स लग गए. ओके, तो हर 24 घंटे के बाद एक पर्टिकुलर टाइम, यूजुअली इवनिंग के टाइम में फीवर होगा. ओके, कितना टाइम लगता है उसको आरबीसी के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के हिसाब से अलग अलग टाइप के मलेरियल इन्फेक्शन होते हैं. तो नाउ द मॉस्किटो will visit the human being for a blood meal. At that time, when she takes the blood meal, these gametocytes also enter into the female body of the mosquito. There it will undergo fertilization in the intestine, develop into ookinete, oocysts. Okay, and then वो जो डिप्लॉयड जाइगोट के जो सेल्स है उनका मियोसिस होगा, स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होंगे. द स्पोरोजॉइट्स विल माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, सो दैट व्हेन शी बाइट्स एन अनदर ह्यूमन बीइंग फॉर अ ब्लड मील, इसका क्या होगा? ट्रांसमिशन हो जाएगा. ओके, सो फर्टिलाइजेशन और मियोसिस फीमेल मॉस्किटो के अंदर हुआ, और मियोसिस की वजह से स्पोरोजॉइट्स बन गए, और स्पोरोजॉइट्स फिर से ह्यूमन बीइंग में चले गए विद अनदर ब्लड मील. ओके, नाउ देयर आर antibiotic medicines to cure malaria. One of the best ways to malaria to prevent the spread of malaria is not to allow the entry of these mosquitoes into your house. So NCRT says that you are supposed to use mosquito nets. Okay, never allow the water to stand still around your houses or in the house. If you have some water plants like that, ठीक है, some plants that you keep, don't keep water around them, things like that बच्चों. Okay, so the best way is to prevent the entry of the mosquitoes. Okay, and if there is some water bodies, then you can keep gambusia fish, which is also called gappi masa. Okay, so there is a common adage in Marathi, gappi masa para malaria tara. Okay, so gambusia fish can be kept in those small water tanks, etc.